The Prime Minister celebrated his 73rd birthday today, and it comes just days after he led the super successful G20 Summit. We managed to build unprecedented 100% consensus on the Delhi Declaration, successfully including African Union as a permanent member of the group and scripting India's rise as the voice of Global South. हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है. It was a difficult and ambitious target, but the 18th G20 was successful in all its parameters. It set the agenda for the divided world and taught it to live together with individual differences. First of all, please allow me to thank Prime Minister Modi. Faithful to its principles, India did its utmost for its presidency of the G20 to serve unity and peace and send across a message of unity while Russia is still waging its war of aggression in Ukraine. I would like to take this opportunity to thank India for a gracious and a very successful term presidency. I would like to thank His Excellency Prime Minister Modi for the gracious hospitality that was shown to my personal self, my spouse, and my entire Turkish delegation. When the world couldn't be brought together to agree on a conflict, when the war in Ukraine polarized the world, the 18th G20 president showed the world how to address the crisis from the point of view of the affected. सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन 55 countries association, the African Union was voted as the new permanent member to the group because Africa, consisting of the most members of the Global South, is reeling from the after effects of war in Ukraine. आप सबकी सहमति से मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं. When the dragon threatens the world with its nefarious financial aid as loan, India as G20 president set the agenda on multilateral development banks for relief. But the bigger headline internationally was the development of a new ship and rail corridor connecting India to the Middle East and the Mediterranean Sea, challenging China's economic clout in the region, and its ambitious Belt and Road Initiative. As a key part of this corridor, we're going to invest in ships and rail that extends from India all the way to Europe, connected by the UAE, Saudi Arabia, Jordan, and Israel. Bridging ports across two continents, unlocking endless opportunities, including making it far easier to trade, export clean energy. Vishwaguru has taught the world to be green and clean as the Delhi Declaration reiterated the 2070 climate goal of reaching net zero target. Brazil has a tall task lying ahead, carrying on the baton as the new president of G20 from India. Bureau Report, India Today. Prime Minister Modi announced new economic corridor to counter China's One Belt, One Road, adding proposed corridor would emerge as an effective means of economic integration between India, West Asia and Europe. Throughout the presidency of G20, India shared a vision of being the voice of Global South, and the country is ensured to walk the talk. Just a week before the Indian Prime Minister Narendra Damodar Das Modi turned 73 years old, he was hailed as the Vishwaguru at the Global Summit of G20. He had a difficult task of bringing a polarized world on one platform, and he did it with elan. Putting economics first,
He ensured that geopolitics played a second fiddle to strengthen trade and business. The revival of the spice route that connects India with the Middle East and Europe was his trump card. इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा. Relations between Arabs and Indians, between Saudi Arabia also and India, beneficial relations for both countries. There was no disagreement at all during the history of this relationship, but there is cooperation to build the future of our country. We are working through this council to achieve these accomplishments. At the heart of it was his resurgent India branding. He used it in the BRICS summit concluded in August. वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बावजूद भारत आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है. जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा. इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा. This resurgent India was the centerpiece of the exclusive Business Today interview with Prime Minister Narendra Modi right after the conclusion of BRICS Summit in Johannesburg. The Prime Minister spoke at length about the impact of India's G20 presidency on the global ecosystem. In a no-holds-barred conversation with the top editorial team of Rahul Kanwal, Siddharth Zarabi and Saurav Majumdar, the Prime Minister laid out the enabling role India is playing on a range of issues. The big takeaway from the over 40-minute interview is the way G20 has changed under India's leadership. To emerge as the voice of the often sidelined Global South. The G20 Summit brought developed and developing countries together for the first time to find solutions to global problems. The Prime Minister pushed and ensured the inclusion of the African Union into the G20, emphasizing that India now acts as a catalytic agent for the new global order. Under his stewardship, India combined its G20 presidency with its growing economic clout to make its tryst with history. At a time when countries across the world are trying to repair the damage from the twin shocks of COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine war, Global South is the worst victim. The world is also adjusting to a new normal of slower growth, higher inflation, widening socio-economic disparities, and extreme weather-related events. Debt traps laid by China in the process of helping underdeveloped and developing countries have caused great distress. India, under Modi's leadership, created an alternative at the G20 and set the agenda on multilateral development banks for relief. The exclusive August interaction at the PM's sprawling, tastefully done-up office in 7 Lok Kalyan Marg had the Prime Minister dressed immaculately and looking relaxed. He spoke passionately about the opportunity India has to help address areas of global concern. India as a potential manufacturing hub, and much more. The Prime Minister exuded confidence that India was ready for the next phase of economic growth. He listed out the mantras which he felt will power this next wave. Vocal for Global, Atmanirbhar Bharat, Zero Deficit, and Zero Effect, among others. Adding that global manufacturers were coming to India, unfolding an era of unprecedented job creation. According to the Prime Minister, domestic consumption remains strong, and with every indicator looking up, economic growth is bound to be strong. With companies like Tesla lining up for an entry into the Indian market and Apple raising its bets on India, the Prime Minister highlighted the effectiveness of the ease of doing business measures taken by the government in the past few years.
saying that massive investments by these companies showed the increasing attractiveness of India as a manufacturing destination. British economist Jim O'Neill, who coined the acronym BRIC in his latest article, hailed Prime Minister Narendra Modi a visionary statesman than Chinese President Xi Jinping. A thumping confirmation of the Vishwaguru Narendra Modi in every sense. The G20 Summit hosted by India for first time was concluded with a series of bilateral and multilateral meetings, cultural events and historic outcomes. Prime Minister Modi, who chaired the summit, made a strong case for reforms in global institutions to reflect the new realities of the world. India has emerged as a frontline nation on the global stage. Take a look. An exceptional moment in the global stage for India. हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है. Under the leadership of Prime Minister Modi, India has achieved a significant diplomatic victory even amid the ongoing conflict in Europe. मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं. इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं. The G20 has unanimously endorsed the New Delhi Declaration, which emphasizes the importance of refraining from threatening or using force to acquire territory. The international community has showered praises on the leader who successfully brought every nation on board. I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 Summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. France has also recognized how India, under the leadership of Prime Minister Modi, skillfully navigated to achieve consensus in a world divided by the Russia-Ukraine conflict. First of all, please allow me to thank Prime Minister Modi. Faithful to its principles, India did its utmost for its presidency of the G20 to serve unity and peace and send across a message of unity while Russia is still waging its war of aggression in Ukraine. Brazil and South America commended Prime Minister Modi's efforts in amplifying the voices of emerging economies on the global stage. I would like to thank very much to Prime Minister Modi and to thank to the Indian people for the competence that they had for organizing this event. UK Prime Minister Rishi Sunak also expresses admiration for Modi's leadership during India's G20 presidency over the past year, especially during a time when the world faced numerous challenges. An extraordinary accomplishment for India and Prime Minister Modi on the global stage. Delivering the keynote address at India Today conclave, Prime Minister Modi talked about how India is shining bright on global stage and the world is saying this is India's moment. आज दुनिया के बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट, थिंकर्स सभी कहते हैं कि ये, और एक स्वर में कहते हैं, इट इज इंडिया's मोमेंट. लेकिन जब इंडिया टुडे ग्रुप
ये ऑप्टिमिज्म दिखाता है तो ये एक्स्ट्रा स्पेशल है। वैसे मैंने 20 महीने पहले लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते 20 महीने लग गए। तब भी भावना यही थी, दिस इज इंडियाज मोमेंट। साथियों, किसी भी राष्ट्र की विकास यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कई पड़ाव आते हैं। आज 21वीं सदी के इस दशक में भारत के सामने जो टाइम पीरियड आया है, ये अभूतपूर्व है। आज के कुछ दशक पहले जो देश आगे बढ़े, कई देश आगे बढ़े हैं, विकसित हुए, लेकिन उनके सामने स्थितियां बहुत अलग थी। एक तरह से उनका मुकाबला खुद से ही था, उनके सामने इतनी प्रतिस्पर्धा नहीं थी। लेकिन आज जिन परिस्थितियों में भारत आगे बढ़ रहा है, वे चुनौतियां बहुत ही अलग है, बहुत ही व्यापक है, विविधताओं से भरी हुई है। आज इतने सारे ग्लोबल चैलेंजेस हैं। अब देखिए, 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ा संकट है। 2 देश महीनों से युद्ध में है। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन अस्त व्यस्त है। उस स्थिति में, इस बैकग्राउंड को सोचिए, उस स्थिति में द इंडिया मोमेंट की बात होना सामान्य नहीं है। ये एक नया इतिहास बन रहा है, जिसके हम सभी साक्षी हैं। आज पूरी दुनिया भारत को लेकर एक विश्वास से भरी हुई है। Prime Minister Modi opened up like never before while speaking to India Today Group editors Shweta Singh, Anjana Kashyap and Rahul Kanwal in Varanasi on the day he filed for his 2019 nomination for the Lok Sabha election. He also touched several topics including Swachh Bharat mission. Listen in to this interview. चुनाव जीतने के बाद मैं धन्यवाद करने के लिए यहाँ आया था और गंगा घाट आरती के ऊपर मैंने एक भाषण किया था और हैरान हो जाएंगे। उस दिन भाषण में मैंने कहा था, मैं क्या करूंगा भूल जाओ, आपको ये करना है, सफाई करनी है, मुझे वादा करो। कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। फिर मैं खुद आया, 80 घाट की सफाई की और वो एक आंदोलन बन गया जी। आप हैरान हो गए। नागालैंड की एक बच्ची, नाम तो मैं भूल गया, ईसाई बच्ची, वो यहाँ पर बनारस आई, फिर यहीं रह गई। उसने एक बड़ा नौजवानों की टोली बनाई और यानी हर सुबह उस पर सफाई करती थी और बीएचयू के लड़के सफाई करते थे। अभी मैं बीएचयू के कुछ लड़कों को मिला, वे मिडिल क्लास फैमिली के थे। वैसे यूनिवर्सिटी में मार धाड़ लड़ाई इसी में मजा आता है। इन बच्चों ने एक टोली बनाई और ये जो कूड़ा कचरा उठाने वाले बच्चे होते हैं उनके पास चले गए और देखा उनमें ड्रग एडिक्ट हो गए थे। साहब 1000 बच्चों को इन्होंने मुख्य धारा में लाया, पढ़ाई करा रहे हैं। मैं उन बच्चों को मिला, उन सादे बच्चों को भी मिला जो कॉलेज के बच्चे कर रहे थे। देखिए, देश में बहुत अच्छी चीजें हैं और मेरा ध्यान हमेशा अच्छी चीजों पर रहता है। खुशी का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खुशी का मतलब क्या है?
अगर आपके चेहरे पर खुशी देखूं तो मेरे मन को खुशी होती है, खास करके किसी गरीब के चेहरे पर खुशी देखो मुझे। मोदी जी, एक बात होती है हमेशा, और मैं 2 टुकड़ों में ये पूछना चाहती हूँ आपसे। गुजराती जो होता है उसको पैसे का बड़ा ध्यान होता है। एक लोग बहुत सारे मुझसे पूछते हैं मोदी जी अपनी सैलरी का क्या करते हैं। एक मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। दूसरा, आपकी माँ आपको बड़े प्यार से पैसे पकड़ाती हैं, आप उन पैसों का क्या करते हैं? एक तो मेरी माँ ने मुझे जो हमेशा क्या देती है, ज्यादा से ज्यादा शायद एक बार 11 रुपया दिया था, ज्यादा से ज्यादा। तो नारियल और मिश्री मिली थी ज्यादा। लेकिन एक बार उसने मुझे 5,000 रुपये दिया। अच्छा, 5,000 रुपया। तो मैं सरप्राइज था जी। और क्या था, तो जिस दिन चीन के राष्ट्रपति आए थे, वो उन्होंने मेरे जन्मदिन की तारीख तय की थी खुद ने, मेरा भी ध्यान नहीं था। और उस समय अहमदाबाद में चीन के राष्ट्रपति आए थे, तो सुबह मैं जन्मदिन था तो माँ को मिलने गया, तो उसने मुझे 5,000 रुपये दिए। मैंने कहा माँ क्या बात है? तो बोले ये कश्मीर, उस समय कश्मीर में बाढ़ आई थी। अच्छा। तो माँ ने कहा कि उनको दे देना। तो मैं इन पैसों को कहीं ध्यान तो नहीं रहता, लेकिन दे देता हूँ, फिर बता देता हूँ कुछ कर लेना। मुझे हमेशा लगता है गुजरात को आप मिस करते हैं ना, क्योंकि एक गुजराती को हमेशा के लिए गुजरात से बाहर कर देना अन्याय है। आपको मैं बताता हूँ, ये यानी इसको कोई तारीफ के रूप में मत देखिए, हर एक का अपना एक नेचर होता है। मैं जब घर छोड़ करके चला गया, शायद 32 साल तक कभी लौटा नहीं था। मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद में घर गया था उनके अंत्येष्टि में। तो मैं बहुत डिटैच रहता हूँ। मैं गुजरात में 95 का चुनाव था, 2/3 बहुमत मिला था। और इस पर उस जमाने में तो एक राज्य का कार्यकर्ता, उसकी कितनी बड़ी वो हवा होती है। मेरी पार्टी ने तय किया कि मुझे अब कहीं और जाना है, तो मेरा हेडक्वार्टर चंडीगढ़ बन गया। तो मैं ऐसे ही अपना झोला लेकर के चला गया, किसी को मालूम भी नहीं था। चंडीगढ़ जाकर के मैंने अपने कार्यकर्ता को फ़ोन किया कि मैं आ गया रेलवे स्टेशन से। तो बोले आप आ गए, अब कहाँ ले जाएंगे? मैंने कहा भाई कोई मुझे बताइए कहाँ जाना है। तो मैं गैराज में रहता था, चंडीगढ़ में एक गैराज के अंदर मैं रहता था, और मैं वहीं, फिर मैं दिल्ली बाद में आया। मैं 5 साल रहा, मैंने कभी गुजरात टेलीफोन भी नहीं करता था। मिस ही नहीं करता। मैं मिस करना ना करना वो शब्द के 2 अलग अर्थ हो जाएंगे। अटैचमेंट नहीं रखते। मैं खुद जहाँ हूँ वहाँ डूब जाता हूँ। अभी मैं आपके साथ हूँ, बस आपके साथ, अभी मैं कहीं नहीं होता। Thanks for tuning into this special broadcast. This is Chaitanya Narula signing off.